Hello everyone, Namaste, Sat Sri Akal, Adab. Hope you are in good health and are making plans for the oncoming festive season. To help you prepare for this holiday, we bring to you a short discussion around a topic that may be of concern to you in planning your holidays. You may already be aware that the Home Office is developing a more digital and streamlined border and immigration system. As part of this, the Home Office is replacing physical immigration documents with a digital proof of immigration status, an e-visa. Although millions of people already have and use e-visas, including everyone granted status under the EU settlement scheme, throughout 2024, people who currently use physical immigration documents to prove their status and rights in the UK are being urged to take action to access their e-visa at www.gov.uk/evisa. I repeat, www.gov.uk/evisa. Some of you may have already heard this good news, but many others may still be unaware. Seema Malhotra, the Minister for Migration and Citizenship, has recently confirmed that expiring BRPs and BRCs will now remain valid as evidence of permission to travel until 31st March 2025, even if they expire on or after 31st December 2024. This decision definitely provides critical reassurance to those who are transitioning to e-visa, ensuring smoother travel without disruptions during this period. Today's interview holds particular significance around this topic. During this discussion, we shall be discussing how the extension allows individuals with expiring BRPs and BRCs to travel confidently without concerns through March 2025. With festive travel around the corner, sharing this update could prevent unnecessary stress during one of the busiest travel seasons. Secondly, we shall also be discussing the benefits of e-visas, including improved security and the ability to access immigration status digitally. To contribute towards this discussion, I have with me Mr. Ravi Bhanot to tell us more about this important campaign and why it matters for our community. Mr. Ravi Bhanot, MBE, is a distinguished Ayurvedic expert with 6 holistic postgraduate qualifications. He is an author and a recognized BAME leader, BAME leader, a philanthropist, and chair of 2 charities. Ravi has been honored with an MBE for his contributions to well-being and community work. Welcome, Ravi. I will proceed with the questions. Hope you are ready for this interview. Thank you, Annu. Yes, already. So, Ravi, you have been discussing this matter on different platforms. But for the benefit of my listeners, I would like to know what is an e-visa and why is this transition occurring? Well, an e-visa is electronic record of a person's immigration status. It replaces the need for the physical document, such as a biometric residence permit, or the ink stamp or vignette visa stickers that are in passports. It explains the immigration status of the holder, including the conditions of the immigration permission, such as their right to work. So visa holders should go to www.gov.uk/evisa to create a UKVI, which stands for United Kingdom Visa Immigration account to access their e-visa. So updating from a physical document to an e-visa does not affect an individual's immigration status or the condition of a person's permission to enter or stay in this country. So what does this transition to e-visa affect? Who does it affect? Well, it affects anyone who has gotten a biometric residence permit, what's called a BRP, and whose card will expire on the 31st of December 2024, or holders of legacy paper documents such as a passport containing an ink stamp or a vignette sticker, which is basically where the holder has an indefinite leave to enter or indefinite leave to remain. So biometric
residence card holder also gets affected. These are the BRC holders. So there are three categories. Right. So, would you kindly elaborate what is the benefit of this e-visa? Well, there are quite a number of benefits. First Okay. of all, an e-visa can't be lost, can't be stolen, can't be damaged. It's free, and your immigration status is not affected. People can prove their rights instantly, accurately, and securely to anyone who may want to know. For example, if they're looking for a new job, or perhaps their landlord may want this information. So with an e-visa, fewer people will need to leave their passport with the Home Office while waiting a decision. So e-visas also mean that customers don't need to collect documents like the BRP or wait for these documents to be sent to them. And also, great thing with a UKVI account is people can easily keep the Home Office abreast with any changes in their circumstances. And people can access many UK government services and benefits without needing to present proof of immigration status. So this is because selected government agencies and departments have securely access immigration status information quite easily, quite and automatically. So it quickens the whole process of whether somebody is looking for a job or whether an employer or a landlord wants to check the status of the individual. It's a very simple check, by the way. Using the secure online service on gov.uk, anyone can access this information. All right. Okay. Got that. Moving on to the next question, I would like to know what is the process for legacy document holders like those with an ink stamp or vignette sticker, which shows indefinite leave to enter or indefinite leave to remain? What is the process for them? Well, so people who've got a legacy document holders, these are people who have already got an indefinite leave to stay or leave to remain, Hmm. or in the UK. So these are people who currently prove their right using a stamp or vignette on their passport. So these Hmm. people, they're encouraged to make a free, what's called a no time limit (NTL) application at www.gov.uk/evisa, which will Hmm. help re-establish their identity so that they can create a UKVI account. It's a Hmm. free service. And once they have this NTL application considered, they will then receive an e-visa. And as part of the application process, customers may need to travel to the UK Visa and Citizen Application Service Centre or a UKV CAS office to provide a photograph and possibly may need to provide fingerprints. Okay. Okay. Will this change affect a person's immigration status? Is there any chance No, of that? no, not at all. Creating a UKVI account and accessing the e-visa will not change, won't impact, or remove the individual's current immigration status or their rights in the UK. Okay. But there's another very important question that comes to my mind is what do e-visas mean for international travel? Well, the Home Office has developed this technology whereby airlines can easily check automatically through their systems the passengers' permission to travel. So Okay. airlines and other carriers are able to accept VLPs expiring on or after the 31st of December 2024 as evidence of permission to travel to the UK. Now it's provisionally until 31st of March 2025, but Hmm. this is still under review. So people traveling in the early part of 2025 are therefore advised to be carrying their expired PRP or PRC with them. So passengers traveling to and from the UK will remain subject to, of course, the usual immigration checks and requirements. So you mean to say that for the earlier part of 2025, people should be carrying their expired BRPs or BRCs, but after that, the authorities will be able to check the visa status online. So which would mean that the travelers would be only carrying their passports?
They obviously carry the passports and any visa they may have. With time, with the e-visa, they won't need the paper visa forms. So Yeah. everything else. So basically, we're moving to the 21st century where the world is going more digital, and this is Mhm. one step further towards that. That's definitely one step further towards that. Perfect. Moving on to a quick question, which is around the cost. So, are there any costs involved for the process of transition to the e-visa? No cost whatsoever. It's a free service. All they Mhm. do, go to the website and fill up the form and start the procedure. Okay. And not everybody finds it easy to go online and get these jobs done by themselves. So, is there any kind of help or support available for people who might feel unsure about what to do? Yeah. Especially with people who are elderly or who may not have English as their first language, this could Mhm. be an issue. So there are many ways that there is help out there. So number one, they can get there's information videos available on gov.uk. That you can access. Also, individual can nominate a helper, somebody who is going to have limited access to their account, so that they can be assisted. There's ठीक also है. the Home Office Resolution Center, which will provide support by email, telephone, or web chat, again available on gov.uk. All right. Also, आपने नाम बताया रेजोल्यूशन सेंटर. Is it? Gigi, correct. जी. So this is अच्छा. resolution center is a place where they can get help. It's more not office as such, but more through email and telephone. But हम्म. having said, there will be some people, Anuji, who don't have a phone or a computer or even internet. So what do? So हम्म. what they can do is they can go through what's called an assisted digital service. So this is a telephone support service where हम्म. there's an advisor, and if हम्म. that doesn't work, there is face-to-face also in-person meeting that you can have in various parts of the country. And this is done through an extensive support system that the government has set up through a grant-funded organizations. So they're out there specifically to help people who need help filling up these forms or who have no idea what to do. So don't worry, the service is there. And of course, if you want to know more information, you just log on to gov.uk slash हम्म. e-visa, which will give you all this information that I'm referring to. राइट, तो ये तो बहुत सारा हेल्प अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्प अराउंड इफ यू आर नॉट वेरी श्योर। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे और रवि जी ने हमें बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिए हैं। पहली बात कि ई वीज़ा के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों चाहिए ये ई वीज़ा? डेफिनिटली इन द 21st सेंचुरी जब सब कुछ डिजिटाइज़ हो रहा है, हो चुका है, आधी दुनिया डिजिटाइज़ हो चुकी है, तो वहाँ पर ये जो एक कार्ड लेकर घूमना पड़ता था, और इस कार्ड के गुम हो जाने का डर होता था हमें कभी-कभी। तो इससे हम बिल्कुल ही निजात पाएँगे, मुक्ति पाएँगे, और बिल्कुल जैसे आजकल हम अपने फ़ोन से ही पेमेंट कर देते हैं, और बहुत कई सारी सेवाएँ हैं जो ऑनलाइन मिल रही हैं। बिल्कुल उसी तरह ई-वीज़ा भी ऑनलाइन ही चेक किया जा सकेगा। और रवि जी आप बता रहे थे कि किस तरह जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या थोड़ा-सा इलैबोरेट कर देंगे हमें अपनी भाषा में, ताकि सुनने वाले लोगों को पता चले कि आपने जो बताया, मतलब किस तरह अथॉरिटीज़ इसे एक्सेस कर सकती हैं? तो ये जो अभी का आजकल इतने डेवलपमेंट होगी टेक्नोलॉजी और जी। एप्स भी बन गए हैं और बहुत आसानी से कोई भी आपका स्टेटस देख सकेगा, आपका जो कंडीशंस है वो भी देख सकेंगे और आप ही खुद। तो अगर आपने ट्रैवल करना है, आपने हुँ, हुँ। जैसे अनुज कह रहे हैं, आपको वीज़ा दिखाना है, आपको सिर्फ वो ई वीज़ा जो है वो ही दिखाना होगा। सो अगर आपके पास कार्ड हो या ना होए फिजिकल वाला, वो ना भी हो फिर भी फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि आपको वो जो अथॉरिटी है उनको ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो इस कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ़ आपके फ़ायदे के लिए। जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आपने जैसे कहा कि कोई भी इसे देख सकेगा। क्या कोई भी इसे देख सकता है या जिसे आपने परमिशन दिया है वही सिर्फ़ देख सकता है आपका स्टेटस? ठीक। तो क्या होगा, एक कोड मिलेगा। सो अगर आपने किसी को दिखाना है, वो हुँ, कोड के साथ ही देख सकेगा। सो दैट हुँ। ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी के लिए ये कुछ प्रोविजंस रखे हुए हैं। सो सिर्फ़ तो मतलब जिसको कोड आप ही जिसके साथ शेयर करेंगे वो देख सकेगा आपका जी, स्टेटस। करेक्ट। जी, Okay, so that's the security around it. If you are the person who are going to be sharing the code, if you wish to share for some reason, whatever that could be, the authorities will be able to check your visa status or any other status, your work status or whatever it is. They'll be able to look into it. But otherwise, your status stays very secure and private. So मुझे लगता है ये भी बताना बहुत ज़रूरी था कि आप सिक्योर हो, हर कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। और जैसा कि आप बता रहे थे थोड़ा-सा इस पर मैं वापस जाना चाहूँगी। जो आप बता रहे थे कि साल की शुरुआत में 2025 2025 की शुरुआती कुछ महीनों तक आप इंसिस्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट चाह रही है कि आप अपना जो एक्सपायर्ड बीआरपी या बीआरसीज़ है उसे कैरी करें और उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं ठीक कह रही हूँ रवि जी? बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो मार्च 25 एंड तक आपको जी। अ, ये जो आप एप्लीकेशन डालनी चाहिए, तो आपके पास वो ई-वीज़ा मिल जाए। ठीक है। और आपने जैसे कि बताया और हमने जैसे सुना कि इसे आपकी ये जो प्रोसेस है इसमें कोई कॉस्ट नहीं है अराउंड दिस ट्रांज़िशनिंग इसमें कुछ नहीं आपको बियर करना पड़ रहा है, कोई कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ रहा है। और अगर आप दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो बहुत सारा हेल्प आपको मिल सकता है। मैं रवि जी से एक और बार दरख़्वास्त करूँगी कि थोड़ा-सा बता दें, इलैबोरेट कर दें कि किस तरह का हेल्प लोगों को मिल सकता है? सो पहले वीडियोज़ हैं वेबसाइट पे, आप हुँ, हुँ। वो देखकर आपको समझ पड़ जाएगी कि क्या करना है। और और अदरवाइज़ वीडियोज़ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? सॉरी ये मैं बीच में कह गवर्नमेंट रही हूँ। वेबसाइट है gov.uk। ओके। उसमें ये सब लिखा हुआ है। हुँ, हुँ। और ऐसे उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑल्सो सेंटर्स कुछ बने हुए हैं, जहाँ हुँ, हुँ। पे आपको हेल्प मिल सकती है बाय ईमेल। या अगर आपने बातचीत करनी है, फ़ोन पे वो भी कर सकते हैं। या कुछ सेंटर्स बने हैं जो जिनको ग्रांट मिले हुए हैं गवर्नमेंट से, हुँ, वो हुँ। सेंटर्स हैं जहाँ आप जो लोग किसी को मिल सकते हैं फेस टू फेस, और हुँ, वो आप सब कुछ समझा सकेंगे, और हुँ। आपको हेल्प हेल्प जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, वो आपको हेल्प कर हुँ। सकेंगे। ओके। तो ये ऑलरेडी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी बनी ऑलरेडी बन चुके हैं। हुँ, सो हुँ। आइडिया ये है कि किसी को भी प्रॉब्लम ना पड़े। अगर हुँ, हुँ। किसी को भी कोई कोई इश्यू होए, एक होम ऑफिस रेज़ोल्यूशन सेंटर भी है, हुँ, जिसको हुँ। जिस बात मैं बात कर रहा था, ईमेल या टेलीफ़ोन और वेब चैट से आप बात कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, असिस्टेड डिजिटल सर्विस है, ये जो हुँ, फ़ोन सर्विस जिसकी मैं बात कर रहा था, या फ़ेस टू फ़ेस वाली जो सपोर्ट है, वो हुँ, हुँ। उनसे आप सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगर आप gov.uk/e-visa स्लैश पे ई जाएँगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन सी सेंटर है, कहाँ है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे आपने अपॉइंटमेंट बनानी है, सब कुछ डिटेल वहाँ पे दी हुई है। लेकिन ज़रूरत ये है कि आप जल्द से जल्द अपना ट्रांज़िशन फ्रॉम एनी अदर kind of visa that you already have or permission to stay in this country, anything that you have, आप उससे ई-वीज़ा पर ट्रांज़िशन करें जल्द से जल्द। और बहुत सारा हेल्प मौजूद है एट दिस मिनट। आपको सिर्फ gov.uk/e-visa पर जाना है और देखना है, समझना है। दिक्कत आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, उसके नंबर्स भी साइट पर दिया हुआ है या फिर आपके करीबी कौन से सेंटर्स इस काम में हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसका भी आपको पता इसी gov.uk/e-visa से मिल जाएगा। तो आपके लिए सिर्फ एक ही काम बनता है कि जल्द से जल्द इस ट्रांज़िशन को इनिशिएट करें ताकि आप इस पेपर वीज़ा या फिर कार्ड जो है उससे मुक्ति पा सकें और
आपके पास एक कोड होगा जो आप बता देंगे ऑथोरिटीज़ को, और वो फटाफट एक्सेस कर लेंगे आपका वीज़ा स्टेटस, तो आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ बहुत ही आसान बन जाएगा। इसके साथ वी ब्रिंग एन एंड टू दिस सेगमेंट। थैंक यू रवि जी, आपने ढेर सारा इंफॉर्मेशन हमें दिया और हमारे लिसनर्स को बताया कि कितना आसान है ये और क्यों करना चाहिए, इसके कितने सारे फायदे हैं। There are loads and loads of benefits, but it is requested that you initiate this transition at the earliest. So I would thank Mr. Ravi for giving all the important information around e-visa and hoping that you would be safe and enjoy the festive season and definitely initiate the transition if you have not started it already or not got it already. Thank you. From the studios of Radio Faza 97.1 FM and DAB, here's your host, Anu, saying goodbye. Thank you.